आपण पूर आलात साईनाथा निश्चये, म्हणून तुमच्या दिव्य चरण मी करीतो वंदना. महाराज माझ्या दुर्गुण पाहू नका किमपीही, मी हीन दीन अज्ञानी पातक्यांचा शिखामणी, युक्त अवघ्या कुलक्षणांनी परी अभेर करू नका. लोहा अंगीचे दोष मनन आणि परीस, गावीच्या लेंड्या ओहोळास गोदान लावी परतवनी. माझ्या मधील अवधी घाण आपुल्या कृपा कटाक्षे करून, करा करा वेगे हरण हीच विनंती दासाची. परिसाचा संग होऊन लोहाचे ते लोहपण, जरी न होय गुरुवरा हरण तरी हीनत्व परिसाची. मला पापी ठेवू नका आपण हीनत्व घेऊ नका, आपण परीस मी लोह देखा माझी चाड आपणाचे. बालक अपराध सदैव करीते परी न माता रागावते, हे आणून ध्यानाते कृपा प्रसाद करावा. हे साईनाथ सद्गुरु तूच माझा कल्पतरू, भवाभीते भव्यतारू तूच अससी निश्चये. तू कामधेनु चिंतामणी, तू ज्ञाननभीचा वासरमणी, तू सद्गुणांची भव्य खाणी अथवा सोपान स्वर्गीचा. हे पुण्यवंता परम पावना, हे शांतीमूर्ती आनंद घना, हे चित्स्वरूपा परिपूर्णा, हे भेदरहिता ज्ञान सिंधो. हे विज्ञानमूर्ती नरोत्तमा, हे क्षमा शांतीच्या निवासधामा, हे भक्तजनांच्या विश्रामा, प्रतीद मदप्रती. तूच सद्गुरु मच्छिंदर, तूच महात्मा जालंधर, तू निवृत्तीनाथ ज्ञानेश्वर, कबीर शेख नाथ तू. तूच बोधला सांवता, तूच रामदास तत्वता, तूच तुकाराम साईनाथा, तूच सखा माणिक प्रभू. ह्या आपुल्या अवताराची परी आहे अगम्यसाची, ओळख आपुल्या जातीची होऊन देता कवनाते. कोणी आपणा म्हणती यवन, कोणी म्हणती ब्राह्मण, ऐसी कृष्णा समान लीला आपण मांडली. श्री कृष्णास पाहून नाना प्रकारे वदले जन, कुणी म्हणाले यदुभूषण, कुणी म्हणाले गुराखी. यशोदा म्हणे सुकुमार बाळ, कंस म्हणे महाकाळ, उद्धव म्हणे प्रेमळ, अर्जुन म्हणे ज्ञान जेठी. तैसे गुरुवरा आपणासी, जे ज्याच्या मानसी योग्य वाटेल निश्चयेसी, ते तुम्हा म्हणतसे. मशीद आपुले वसती स्थान, विंधा वाचून असती कान, पात्याच्या तऱ्हा पाहून यवन म्हणणे भाग तुम्हा. तैसी अग्नीची उपासना पाहुनी आपुली दयाघन, निश्चय होत आमुच्या मन की आपण हिंदू म्हणून. परिभेद हे व्यावहारिक, याचे चाहतील तार्किक, परी जिज्ञासू भाविक, ज्ञान वाटे महत्वयांचे. आपुली आहे ब्राह्मस्थिती, जात गोतना आपणा प्रती, आपण अवघ्यांचे गुरुमूर्ती आहात आद्य कारण. यवन हिंदूंचे विपट आले, म्हणून तदैक्य करण्या भले, मशीद अग्नीला स्वीकारिले, लीला भक्तांस दावावया. आपण जात गोतातीत, सद्वस्तु जी का सत, तीच तुम्ही साक्षात तर्कातीत साचकी. तर्क वितर्कांचे घोडे चालले किती आपणा पुढे, तेथे माझे बापुडे शब्द टिकतील कोठुनी. परी पाहुनी तुम्हाला मौन नये धरिता मला, का की शब्द हेत स्तुतीला, साहित्य आहेत व्यवहारी. म्हणून शब्दे करून जे जे होईल वर्णन, ते सर्वदा करीन आपुल्या कृपा प्रसादे. संतांची योग्यता भली देवाहून आगळी, अजादुजास नाही मुळी स्थान जवळ साधूंच्या. हिरण्यकश्यपु रावणाला देवद्वेषे मृत्यू आला, तैसा एकही नाही घडला प्रकार संत हस्ताने. गोपीचंदे उकिरड्यासी गाडिले जालंधरासी, परी त्या महात्म्यासी नाही वाटला विषाद. उलट राजाचा उद्धार केला, चिरंजीव करुणी सोडिला, ऐशा संतांच्या योग्यतेला वर्णन करावे कोठवरी. संत सूर्य नारायण कृपाद्यांची प्रकाशपूर्ण,
संत सुखद रोहिणी रमण कौमुदीती तत्कृपा संत कस्तुरी सोज्वळ कृपा त्यांची परिमळ संत इक्षु रसाळ रसनभाळी तत्कृपा संत सुष्ट दुष्टांप्रती समसमान निश्चिती उलट पाप्यावरी प्रीती अलोट त्यांची वसतसे गोदावरी जलात मळकटतेत धुवाया येत निर्मळते संदुकीत राहे लांब गोदे पासुनी जे संदुकी मध्ये बसले तेही वस्त्र एकदा आले होते धुवावया लागी भले गोदावरीचे पात्रात येथे संदुक वैकुंठ गोदा तुम्ही निष्ठा घाट जीवात्मे हे चपट षड्विकार ఓం సాయి మాస్టర్, ఓం సాయి మాస్టర్, ఓం సాయి మాస్టర్. 2025 సంవత్సరం జనవరి నెల 12వ తేదీ సద్గురుమూర్తుల పాదపద్మములకు మన్నవ సత్యం పుష్పాంజలి సమర్పిస్తున్నాడు. మిత్రులారా, ఇప్పుడు సమాధి మందిరం, బాబా సమాధి మందిరం నుంచి జరుగుతున్న ప్రత్యక్ష ప్రసార దర్శనంలో బాబా సమాధి వద్ద భక్తుల దర్శనాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇంతకు ముందు వలే కాక పూజారులు భక్తులు తెచ్చిన పూలమాలలు, వస్త్రాలు, నైవేద్యాలు అన్నీ స్వీకరించి బాబాకి తాకించిస్తూ ఉన్నారు. రద్దీగా ఉండటం వల్ల పెద్ద పెద్ద అద్దాలు పెట్టారు. మిత్రులారా, మరొకసారి బాబా పాదాలకు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ మనల్ని అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. వారు మన ప్రార్థన ఆలకిస్తారు, మనల్ని అనుగ్రహిస్తారు. సమాధి మందిరంలో పారాయణ జరుగుతూ ఉన్నది. भीषण साधलासे रामराण संतांमुळेच मोठे